नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अमित शाह, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, गृह मंत्री जी, राज्यों के पुलिस महानिदेशक, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आजकल देश में उत्सव का माहौल है। ओणम, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली सहित अनेक उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए हैं। अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता, अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। जब ये सुशासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ्य का विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है जिसका लाभ देश के हर राज्य को, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, यहां आप में से अधिकतर या तो राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं या फिर सीधे सीधे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है। इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में आप सभी के निर्णय और नीतियां और आपकी रीति ये बहुत अहम है। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा। ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए। इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। और आप देखिए, एनडीआरएफ में है कौन भाई? एसडीआरएफ में है कौन? आप ही के सब साथी हैं, सुरक्षा बल के जवान ही हैं। लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है। आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, अब से अपना काम कर लेंगे। साथियों, अपराध वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी। पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपने जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे। यानी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए। साथियों, हमें एक बात और समझनी होगी। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको मालूम होगा, मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2 एडजॉइनिंग स्टेट होते हैं, उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने पीरियोडिकली बैठ करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकलन करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी में से ताकत बनेगी। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो,
चाहे केंद्र की एजेंसी हो या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में कभी कभी तो हम देखते हैं एक आध एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो बोले ये तय नहीं हो रहा है कि वो जो जगह है वो इस थाने में पड़ती है, उस थाने में पड़ती है। ये जो चीजें हैं वो सिर्फ पुलिस थाने तक नहीं है, राज्यों के बीच भी हो जाती हैं, केंद्र और राज्य के बीच में हो जाती हैं, भारत और विदेश की व्यवस्थाओं के साथ हो जाती हैं। इसलिए हमारी एफिशिएंसी के लिए, हमारे आउटकम के लिए, सामान्य नागरिक को सुरक्षा देने के लिए हमारे बीच में तालमेल, संकलन, सहयोग बहुत अनिवार्य है। और इसके लिए जितना संकलन बढ़ेगा, आपके राज्य की भी ताकत बढ़ने वाली है। साथियों, साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। अब देखिए, हम 5G के युग में घुस गए हैं। तेजी से 5G पहुंचने वाला है। अब 5G के जितने लाभ है, इतनी ही जागरूकता भी जरूरी रहेगी। 5G से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन और सीसीटीवी जैसी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस में ये कई गुना सुधार होने वाला है। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। साथियों, मेरा आग्रह ये भी है कि टेक्नोलॉजी को कृपा करके बजट के तराजू से न तोले। और मेरा सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों से, सभी आदरणीय गृह मंत्री जियों से इस विषय में एक टीम बना करके दुनिया में क्रिमिनल वर्ल्ड किस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उपलब्ध टेक्नोलॉजी हमारे लोगों को कैसे सुरक्षा दे सकती है, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसमें जो बजट जाएगा वो बाकी सैकड़ों खर्चों को बचाने का कारण बन जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल पूरे पुलिस तंत्र को तो मजबूत करता ही करता है, सामान्य मानवीय को सुरक्षा देने का एक विश्वास नीचे तक हम पहुंचा पा सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्राइम प्रिवेंशन में भी मदद करती है और क्राइम डिटेक्शन में भी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत काम आती है। आज देखिए, कितने ही अपराधी सीसीटीवी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहरों में बनाए गए आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी बहुत मदद मिल रही है। साथियों, इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भी शुरू किया है। अनेक राज्य भी इसमें अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन यह अनुभव आ रहा है कि हमारे अलग अलग प्रयोग होने के कारण हमारी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ बात नहीं करती है और इसलिए हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। वो जो भी मटेरियल है वो उस राज्य तक सीमित रहता है। हमें कॉमन प्लेटफॉर्म के विषय में बड़ा मन रख करके सोचना ही पड़ेगा। किसी एक के पास बहुत उत्तम चीज है तो ये मान करके न बैठे कि मेरे पास है, मैं तो किसी को दूंगा नहीं, मैं अपनी ताकत बनाए रखूंगा। एक समय आएगा, कितनी उत्तम टेक्नोलॉजी होगी और लोगों के सहयोग में नहीं होगी तो स्टैंड अलोन निकम्मी हो जाएगी।
और इसलिए टेक्नोलॉजी में भारत के संदर्भ में मैं सोच रहा हमारी सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट इनोवेशन कॉमन लिंक वाले ही होने चाहिए, इंटर ऑपरेबल होने चाहिए, एक दूसरे के साथ लगातार सरलता से बात कर सके, ये व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं। साथियों, आज फॉरेंसिक साइंस का महात्म्य बढ़ रहा है और वो सिर्फ पुलिस महकम के तक सीमित नहीं है जी। लीगल फैटर्निटी को फॉरेंसिक साइंस समझना पड़ेगा, जुडिशरी को फॉरेंसिक साइंस समझना पड़ेगा, इवन हॉस्पिटल को भी फॉरेंसिक साइंस समझना पड़ेगा। इन सबके प्रयत्न से ही फॉरेंसिक साइंस का उपयोग क्राइम और क्रिमिनल को सजा दिलाने में बहुत काम आ सकता है। अकेला पुलिस के पास फॉरेंसिक साइंस की कुछ व्यवस्थाएं इनफ नहीं होगा और इसलिए हर राज्य में हमें संकलित और संतुलित व्यवस्था, हर राज्य को गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की और उसकी क्षमता आज दुनिया के 60-70 देश फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का लाभ ले रहे हैं। हमारे राज्यों ने भी बढ़ चढ़ करके लाभ लेना चाहिए। ये पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी वहां काम है, नए नए टेक्नोलॉजी टूल बनाने का भी काम है और केस, बड़े कठिन केसेस को सुलझाने में भी वो लैब काम आ रही है। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था का उपयोग सभी राज्य सक्रियता से कैसे करें। साथियों, कानून व्यवस्था को बना रखना एक 24/7 वाला काम है, लेकिन किसी भी काम में यह भी आवश्यक है कि हम निरंतर प्रक्रियाओं में सुधार करते चले, उन्हें आधुनिक बनाते चले। बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। उन्होंने पूरे देश में शांति का वातावरण बनाने में मदद की है। आप भी जानते हैं कि भारत की विविधता, भारत की विशालता की वजह से हमारे लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम पर कितना दबाव होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा ये सिस्टम सही दिशा में ऊर्जा लगाएं, वरना हमने देखा है कि कितने ही अनावश्यक केसों में छोटी छोटी गलतियों की जांच में ही पुलिस डिपार्टमेंट की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए हमने व्यापार कारोबार से जुड़े अनेकों प्रावधानों को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त करके भविष्य का बहुत बड़ा बोझ कम किया गया है। मैं तो राज्यों से भी आग्रह करता हूं, आप भी अपने यहां कानूनों को इवेल्युएट कीजिए। आजादी के पहले के जितने कानून हैं उनको वर्तमान तारीखों के साथ बदलाव लाइए। हर कानून में क्रिमिनल एंगल और निर्दोष नागरिकों को परेशानी, वो वक्त चला गया है जी। साथियों, सरकार को अब जैसे स्वामित्व योजना, ये स्वामित्व योजना के तहत देश के गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड वितरित कर रहे हैं। वो भी जमीन से जुड़े विवादों को कम करेंगे, झगड़े खत्म होंगे गांव के। वरना गांव की समस्या ज्यादातर 1 फुट जमीन इसने ले ली, उसी में से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। साथियों, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किए गए ऐसे अनेक प्रयासों से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी अपनी प्राथमिकता तय करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन हमने जब पूरे कैनवास पर चीजों को रख करके अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं करेंगे, 20, 30, 50 साल पुरानी पद्धतियों से चलेंगे, तो शायद इन चीजों का फायदा नहीं मिलेगा। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों ने भी कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। आतंकवाद हो, हवाला नेटवर्क हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर
आज देश में अभूतपूर्व शक्ति दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें। कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की पुलिस के नए नए विभाग शुरू हुए हैं, एक्सपर्टाइज आई है। अब हम देखिए, दुनिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में टूरिज्म की संभावना बहुत बढ़ रही है। विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्टों का भारत में आने का प्रवाह बढ़ना ही बढ़ना है। आज दुनिया में कई देश जो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, वहां टूरिज्म के लिए काम करने वाली पुलिस बनाई जाती है। उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनको लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है, उनके बिहेवियर पूरी तरह चेंज होता है। और यात्रियों को भी, विदेश के टूरिस्टों को भी पता होता कि भाई ये मदद करने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। और वो पुलिस होने के कारण वो पुलिस एनफोर्समेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उससे भी बड़े आसानी से संकलन कर पाता है। कभी न कभी हमें हमारे देश में इस विधा की एक्सपर्टाइज को डेवलप करना ही पड़ेगा, ताकि भारत में ये जो सब, और टूरिज्म विश्व भर से आने वाला आदमी, एक पूंजी निवेश के लिए आने वाला और टूरिस्ट में आने वाले में बहुत फर्क है। टूरिस्ट तुरंत आपका एम्बेसडर बन जाता है। अच्छी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा, बुरी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा। पूंजी निवेश जो करता है उसको इस काम में कई समय लग जाता है अगर गलत हो गया तो, लेकिन टूरिस्ट तो 2 दिन में ही खबर पहुंचा देता है, यार भाई यहां तो ये हाल है। और इसलिए आज भारत में भी मिडिल क्लास का बल कितना बढ़ रहा है, टूरिज्म को लेकर के बहुत बदलाव आ रहा है। अब टूरिज्म और ट्रैफिक नई समस्या आ रही है। अब हम एडवांस में नहीं सोचेंगे, ऑल्टरनेट नहीं सोचेंगे, तो वही टूरिज्म के हमारे सेंटर तो कोई बदलने वाले नहीं है। हम कहें कि नहीं अब शिमला नहीं वहां जाइए, तो ये तो होने शिमला, जिसको जाना है शिमला ही जाएगा। नैनीताल जाना है वो नैनीताल ही जाएगा, श्रीनगर जाना है वो श्रीनगर जाएगा, गुलबर्ग जाना है वो गुलबर्ग जाएगा। हमें व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। साथियों, हमने देखा है कोरोना के समय में जब पुलिस के लोग अपने क्षेत्र के लोगों को फोन करके पूछते थे, और खास करके मैंने देखा है कुछ शहरों में सीनियर सिटीजन के लिए
पुलिस में जो बड़ी आयु के लोग हैं, जिनसे अब ज्यादा मजदूरी करवाना, उनके साथ भी अत्याचार है, उन्होंने स्वेच्छा से ऐसे काम लिए हैं और वे सीनियर सिटीजन्स को लगातार पूछते हैं ठीक होना, कहीं बाहर तो जाने वाले नहीं होना, घर बंद करके जाने वाले नहीं होना। इसके कारण नागरिकों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो एक प्रकार से आपकी ताकत बन जाता है। इस चीज को हम जितना ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं और पूरी तरह जीवंतता हो, संवेदनशीलता हो। आप देखिए समाज जीवन में ये फोन आपका सप्ताह में अगर किसी सीनियर सिटीजन को जाता है, वो महीने भर दुनिया को कहता रहता है कि भाई पुलिस थाने से हर बिल्कुल फोन आ जाता है, हर बुधवार को पूछ लेते हैं मेरी कोई दिक्कत है नहीं। इन चीजों की बहुत बड़ी ताकत होती है। जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, ये आपके सारे परसेप्शन बनाने वाले लोग हैं। हमें एक और काम की तरफ बहुत सजग होने की जरूरत है जी। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इसका अपने ये ताकत है, उसका उपयोग है, लेकिन हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को नकार नहीं कर सकते हैं। उस विधा को पुलिस डिपार्टमेंट ने आज से 100 साल, कितनी टेक्नोलॉजी बदल जाए, 100 साल के बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है। उस इंस्टीट्यूट को जितनी ताकतवर बना सकते हैं बनाइए। उसमें जो सामर्थ्य है, उसकी जो नजरें हैं, वो उसकी जो बातचीत में से जो पकड़ के ले आता है, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर दोनों क्षेत्रों में ताकत है, फिर तो आप चीजों को बहुत आसानी से कल्पना कर सकते हो। ये संभावना है, 10 दिन के बाद ये संभावना दिखती है, ये चल रहा है, चलो हम देखते हैं, यहां कुछ लोग आते हैं जाते हैं, कुछ हो रहा है, तुरंत पता चलेगा। और मैं समझता हूं इसके कारण हमारी व्यवस्थाएं बहुत चुस्त हो जाएगी, जो 50 बार क्राइम करने वालों को सोचने के लिए मजबूर करेगी। साथियों में एक और बात भी समझनी है। आज वैश्विक स्तर पर भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भारत की चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। पहले वो उपेक्षा की वृत्ति होती है, फिर उसका जरा मजाक उड़ाने की वृत्ति बनती है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ी कंपटीशन का भाव आ जाता है, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, फिर भी आगे बढ़ते हैं तो दुश्मनी का रंग ले लेती है। विश्व की बहुत सारी ताकतें होगी जो नहीं चाहेगी कि उनके देश के संदर्भ में भारत कुछ सामर्थ्यवान बने। फलाने विषय में उनकी एक्सपर्टाइज है, उसमें भारत न घुसे। फलानी प्रोडक्ट उनकी बपौती है, अगर उसमें भारत प्रोडक्शन में चला गया तो मार्केट भारत कब्जा कर लेगा। भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत खुद बनाने लग जाएगा तो फिर तो हमारा माल कहां जाएगा। कई प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं जी, और वो चुनौतियां दुश्मनी का रूप लेते देर नहीं जाती है। और इसलिए हमें हमारे इन सारी चैलेंजेस को हमें समझना है। और ये सहज है, किसी को हमसे कोई हमारा बुरा करना है नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। आपके यहां भी 2 अफसर होंगे तो लगता है कि हाँ यार ये आगे चलकर इसकी क्यों प्रमोशन हो जाएगा, मैं तो रह जाऊंगा, तो फिर उनका 10 साल पहले ही तू शुरू हो जाता है। वैसा हर जगह पे होता है भाई। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम थोड़ा दूर का सोच करके हमारे सामर्थ्य को, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, प्रॉपर मैसेजिंग, इसके लिए आवश्यक बारीकियों, जो पहले की लॉ एंड ऑर्डर और आज की चुनौतियों में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। पहले का तो बरकरार रखना ही पड़ेगा, नए को लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें देश के विरोध में जो ताकतें खड़ी हो रही हैं, जिस प्रकार से हर चीज का उपयोग किया जा रहा है, सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए, लॉ अबाइडिंग सिटीज के अधिकारों के लिए ऐसी किसी भी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर बर्ताव ही हमारी जिम्मेवारी है। कोई उदारता नहीं चल सकती है जी, क्योंकि आखिरकार जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है
जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है वो कहां जाएगा भाई? हमारा काम है, और ऐसे 99% सिटीजन वही होते हैं जी, 1% का ही प्रॉब्लम होता है। हमें उन 99 को विश्वास दिलाने के लिए उन 1% के प्रति जरा भी उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो, और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। साथियों, सिविल डिफेंस की आवश्यकता है। और जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, भाई कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान अभी हट रहा है। अमित भाई ने सही चीजों को पकड़ा है। आप लोग भी चिंतित, ये जो अनेक दशकों से चली हुई चीजें हैं, इसका बहुत उपयोग है। स्कूल कॉलेज में भी इसको हमने सिविल डिफेंस से विषय हो, प्राइमरी हेल्थ वाले विषय हो, ये जो चीजें होती हैं जो पहले भी करते थे हम लोग, फायर फाइटिंग की व्यवस्था में पहले भी करते थे, इसको हमने सहज स्वभाव बनाना चाहिए। और मैंने तो कहा है हर नगर पालिका, महानगर पालिका में सप्ताह में एक दिन किसी स्कूल में जाकर के फायर फाइटिंग के क्षेत्र के लोग और पुलिस ने जाकर के ड्रिल करनी चाहिए। तो स्कूल के बच्चे देखेंगे तो उनका भी एजुकेशन हो जाएगा, जो सिस्टम है वो भी उनकी ड्रीम और प्रैक्टिस होती जाएगी। अगले हफ्ते दूसरी स्कूल, फिर एक स्कूल का 10 साल में एक बार बारी आएगी बड़े शहर में तो। लेकिन हर पीढ़ी को पता चलेगा भाई सिविल डिफेंस के संबंध में, फायर फाइटिंग के संबंध में ये सारी ड्रिल नागरिकों को करनी होती है। आपको भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी जी, ये सहज रूप से करने वाला काम है। साथियों, बीते वर्षों में आतंक के ग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की में सभी सरकारों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ उसकी गंभीरता को समझ करके कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। कहीं पर शायद सफलता पहले मिली हो, कहीं देर से मिली हो, लेकिन हर एक को इसकी गंभीरता में आज समझाना पड़े ऐसा नहीं है। अब हमें ताकत को जोड़ करके इसको हैंडल करना है जी। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए ऐसी बचकाना बातें कर करके चल पड़ते हैं लोग, और इतना नुकसान देश को हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा जी। और इसलिए हमने जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं, बिखराव पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है जी। लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा। हमारे फोर्सेज में भी ऐसी एक्सपर्टाइज तैयार करनी पड़ेगी। किसी राज्य में कोई घटना घटी है तो हमारे टॉप एक्सपर्ट को वहां स्टडी के लिए भेजना चाहिए। जरा जाओ 3 दिन वहां रह के आओ,
वहां पर हुआ है तो उन्होंने कैसे हैंडल किया था, मामला कैसे पनपा था, उससे हम सीखते हैं। सीखने के लिए हमने लगातार कोशिश करनी चाहिए। और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं, वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है और वो इसमें चतुर होते हैं। और उनका चेहरा मोहरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है, इतना बड़ा संविधान और कानून की भाषा में ही बोलते हैं, प्रवृत्ति कुछ और करते हैं। इन सारी चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी ये समझने की ताकत हमारे सिक्योरिटी सामर्थ्य में होनी चाहिए जी। हमें स्थायी शांति के लिए तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। साथियों, जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आज हम विश्वास गेन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव ताकतों को भी मुख्य धारा में आने का मन करने लगा है। So that was Prime Minister Modi addressing the Chintan Shivir on national security issues in Faridabad. We're slipping into a very short break. Stay tuned. News and updates will continue on the other side. You are watching India Today. From the makers of Aaj Tak and India Today, the undisputed leaders in Indian news, we understand news like no other. Trust 30 years of leadership and 100 plus years of editorial independence. When it comes to decisions that affect your finances, trust only Business Today. You are watching India Today. Welcome back. The sexist comments made by DMK Neta Saidai Sadiq has led to a major embarrassment for the DMK party. Sadiq quoted controversy when he said that all four actors turned BJP leaders are items. The comments led to huge backlash against the leader. On Twitter, Khushbu Sundar questioned if insulting women was part of the new Dravidian model. DMK MP Kanimori apologized for the comments made by Sadiq, claiming that the remarks are against the ethos of DMK. My colleague Akshay Nath is joining me live right now. Akshay, this has of course led to a huge storm. The kind of comments which were made by the DMK Neta clearly not going down well with the BJP and of course causing embarrassment to the DMK itself. Well, we're seeing that multiple statements in the line made by DMK has been going viral, and the most recent of them is the one made by Saidai Sadiq, where he has criticized and made very bad remarks about the women politicians in the BJP and especially actress turned politician Khushbu. Actually, just hold on for a minute. Khushbu Sundar is joining us over the phone line right now. Ms. Sundar, I mean, what are your remarks about these comments, these very below-the-belt comments that have been made against BJP leaders, including yourself, by this DMK leader? Like I said, it just shows the kind of upbringing they have had. You know, a person normally grown up in a normal environment will not make such degrading comments, and they were absolutely to the lowest ebb. A man who can stoop to this level is what this kind of comment shows, that a man to be noticed can stoop to any level. And this is very, very below the belt. And like I said, it's not degrading me alone or my colleagues in the party or the same film fraternity. I would say it's insulting every woman. It's an insult to every woman
every mother, because this just shows the kind of upbringing and the mentality this man has. Right. Of course, DMK MP Kani Modi has apologized for the same. What do you have to say about that? Well, I really appreciate, because that's why I tagged Kani. I have known Kani for a very long time, since I've been in DMK. And apart from that, Kani has been a good friend. We have kept in touch. And when I tagged Kani, I definitely was expecting her to respond. I would have been disappointed if she didn't. And I'm glad that she did. And she has condemned the whole thing. She said the party and the party leader, our Honorable CM, do not condone this. But I would really appreciate if the Chief Minister could expel such people from the party. Because like I said, I have been in DMK. And the first lesson that I learned from Dr. Kalingar when I entered DMK was to respect women. Absolutely. And that's why I wanted to know if this was a new model under the leadership of Mr. M.K. Stalin. Right. Ms. Sundar, thank you so much for speaking to India Today. Over to my colleague Akshata, who will be speaking to Saida Sadiq, who in fact made those remarks. Akshata. Joining us now is the DMK leader who made these comments. Sadiq, நீங்க patched கேட்க முடியுமா? சொல்லுங்க மேடம். சார், நீங்க என்ன வார்த்தை சொன்னீங்க அது ஆன் ஏர் கூட போட முடியாது. அவ்வளவு கேவலமா வார்த்தை நீங்க சொன்னீங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க இப்போ குஷ்பு மேடம்க்கு உங்களோட ஓட்டர்ஸ் தமிழ்நாடுல உங்க மெசேஜ் என்னது? நேற்று நைட்டே திருமதி குஷ்பு மேடம் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன். அந்த வார்த்தை தவறாக பொருள் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது, தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு எங்களுடைய ஹைகமானும் என்னை கூப்பிட்டு வார்ன் பண்ணிருக்காங்க. அப்படி இனிமே அப்படி வாய் தவறி வார்னிங் கொடுத்திருக்காங்க இல்ல வார்னிங் கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க ரிசைன் பண்ண மாட்டீங்கல்ல? இல்ல ரிட்டர்னுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. நான் என்னுடைய தவறு சொல்றேன். நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? நீங்க எப்படி இப்போ சொல்றீங்க ஒண்ணுமே இல்ல? அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி காமெண்ட் பண்ணது ஓகேவா? மேடம், நான் கட்சியில பொறுப்புல இல்லைன்னு சொல்ல வரேன். நான் சாதாரண ஸ்பீக்கர். எனக்கு இருக்கிற வருத்தம் எல்லாம் இதே அக்கா கனிமொழியை பத்தி கலைஞர் நீங்க சார் ஒரு நிமிஷம். நீங்க திமுக இருக்கீங்களா இல்லையா? நீங்க திமுக லீடர் தானே? நீங்க அந்த கட்சியில இருக்கீங்கல்ல? ஆமா, டிஎம்கே ஸ்பீக்கர். அப்படின்னா நீங்க கட்சியில இருந்தீங்கன்னா நீங்க எப்படி சொல்றீங்க என்னமோ சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதானு? நான் என்னவோ சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான் சொல்லல. நான் கட்சியில எந்த பெரிய பொறுப்புலையும் இல்ல, சாதாரண ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்றேன். ரெண்டாவது விஷயம், உங்களுக்கு இல்ல நீங்க திமுக ரெப்ரசென்ட் பண்ணல. நான் டிஎம்கேல சாதாரண ஸ்பீக்கர் மேடம். என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா, இதே அக்கா கனிமொழியை பத்தி, கலைஞரை பத்தி, தளபதியை பத்தி, கலைஞருடைய குடும்பத்தை பத்தி யாரோ சாதிக் யாரோ திமுக விடுங்க, அதிமுக, பிஜேபி வந்து கனிமொழி மேடம் பத்தி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க? இதை விட கேவலமா பேசிருக்காங்க மேடம் பிஜேபிலயும் ஏடிஎம்கேலயும். இல்ல ஒரு நிமிஷம். நீங்க எக்ஸாக்டா என்ன சொன்னீங்க? அதே எக்ஸாக்டா யாரோ ஒரு திமுக லீடர் பத்தி, ஒரு பெண்கள் பத்தி சொன்னாங்கன்னா நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க? இதை விட கேவலமா பேசிருக்காங்கன்னு சொல்றேனே. இத பத்தி சொல்லுங்க. அதுதான், இதை விட கேவலமா கலைஞர் குடும்பத்தை பத்தியும் கனிமொழி அக்காவை பத்தியும் சிஎம் பத்தியும் பேசியிருக்காங்க. ஆனா அது ஓகேவா? இல்ல அவங்க பேசுற போதெல்லாம் ஹைலைட் ஆகாம நான் ஏதோ தெரியாம பேசுனதப்ப இவ்வளவு ஹைலைட் ஆக்குறாங்க. அதுக்காக தான் நான் அந்த அக்கா கிட்ட, குஷ்பு அக்கா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன்னு சொன்னேன். மன்னிப்பு கேக்குறீங்க, சரி. குஷ்பு சுந்தர் இருக்காங்க நம்மோட. குஷ்பு, thank you. I'm Akshita speaking here. We'll be talking in Tamil. I will translate this later for our viewers. I think it's important right now to put out what Sadiq is saying. He's saying, மன்னிப்பு கேக்குறேன், I'm apologizing to you. Do you accept his apology? Because it definitely seems half-baked to me. Kushbu, can you hear me? Kushbu Sundar, can you hear me? Akshita here. With Kushbu in just a bit. But Kushbu, essentially the message, சாதிக், நீங்க கேட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி, குஷ்பு சொன்னாங்க நீங்க என்னமோ மன்னிப்பு கேக்குறீங்க, ஆனா அது போகாது. ஏன்னா நீங்க இது கூட சொல்றீங்க அதிமுக இந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா ஒண்ணுமே ஆகாதுன்னு. அதிமுக பிஜேபியும் அதிமுகவும் எங்க லீடர் ஃபேமிலியை பத்தி எல்லாம் இதை விட கேவலமா பேசி இருக்காங்க. அப்போலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஹைலைட் ஆகல. இல்ல அப்போ நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்க?
இல்ல மேடம், நான் கேக்குறது இதே அக்கா கனிமொழியை பத்தி, கலைஞர் ஃபேமிலியை பத்தி இவ்வளவு ரொம்ப கேவலமா பேசின எல்லா வீடியோவும் இன்னைக்கு யூடியூப்ல இருக்கு. ஆனா அன்னைக்கு இந்த மாதிரி எந்த நேஷனல் ரெண்டு பாயிண்ட் சாரி. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க, அது இன்னொரு வார்த்தை பண்ண முடியுமா? இல்ல மேடம், நான் அது திருப்பி நான் சொல்ல வேண்டும். நான் முதல்லயே சொல்லிட்டேன், என்னுடைய பேச்சு பொருள் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது, தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. நான் அதனாலதான் பகிரங்கமா அவங்க கிட்ட சொன்னேன், உங்க மனம் புண்பட்டிருந்தால் மன்னிக்கணும். இன்னொரு விஷயம் நீங்க மன்னிப்பு கேட்டீங்க. Kushbu, Akshita here, we've been having a conversation in Tamil with Mr. Sadiq. He's saying he apologizes to you, but at the same time when I asked him if these kind of comments were made about DMK women leaders, about anyone in his party, then he says that there have been far worse comments that have been made. Akshita, I refuse to speak to men, especially people like Sajid who can stoop to this level. Like I said, it's very unfortunate to see the kind of upbringing he has had, and the kind of a very, very toxic environment he probably grew up in. A man who's been brought up in a very normal environment and whose upbringing has been fantastic, he wouldn't be speaking on those lines. So I refuse to speak to this man. And just because somebody else has spoken, it cannot mean that you have the right to speak. And the kind of words he has used while, at the on the dais at the meeting, I think he would never ever use that for any other woman. He thought it's okay, it's his birthright to abuse a woman in such a low manner. And I refuse to have a conversation with these people. I'm extremely happy that Kanimori has reacted, but I'm waiting for the CM who talks about women empowerment. And we have had a leader like Dr. Kalingar, where I joined the party I joined DMK in 2010. The first thing Dr. Kalingar had asked me is to watch my words when I speak about any women. There should not be even a single derogatory word about Madam Jayalalitha or any other female leaders in the party or outside the party. That's the first thing Dr. Kalingar had taught me. And I'm surprised I completely understand, Kushbu, when you say you don't want to indulge with this kind of a man, but I want to put forth a question to Sadiq here. Sadiq, idana Dravidian model of development Tamil Nadu la? Idana தலைவர் சொன்னாங்க Dravidian model னு? நான் இப்ப இதுல பாலிடிக்ஸ் பேச விரும்பல. இது திராவிடியன் மாடலா இப்ப நீங்க பாலிடிக்ஸ் சொல்றீங்க. எங்க பாலிடிக்ஸ் இதுல பாலிடிக்ஸ் எங்க? இதானா Dravidian மாடல்? நீங்க தான் சொன்னீங்கல்ல நம்ம Dravidian மாடல் எடுத்துட்டு வரோம் தமிழ்நாடுல. இதான் Dravidian மாடலா? இல்ல, திராவிட மாடல் என்பது வளர்ச்சிக்கும் ஒரு தனிநபர் தப்பு பண்றதுக்கும் முதல்ல சம்பந்தம் இல்ல. ஒண்ணு, இப்ப நான் அதுக்கு திருப்பி பதில் சொன்ன வச்சுக்கீங்களேன், அது வாதம் வளர்ந்துகிட்டே போவோம். நான் அதை வந்து முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் தப்பு பண்ணேன்னு யோசிக்கிறாங்க, அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன். நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு முடிக்கணும், ஏன்னா இப்போ இவ்வளவு கான்ட்ரோவர்சி ஆயிடுச்சு. அது ஃபர்ஸ்ட் குஷ்புவோட prerogative. Kushbu gets to decide when this gets over. If she demands answers from you, you have to give it, because you've made these dirty, lewd, unbelievable comments against her. Kushbu, do you buy what he says? He says that, I have apologized, I want this to end now. Absolutely not, Akshita. First thing he says, he can't be made political. Let me remind him, he spoke at a totally political platform with one of the ministers being there on the dais. He spoke at a political platform. And the way he said, no, it was not meant to be pulled into a controversy. Please ask him to watch the way he spoke, the kind of words he's used. And he's made a mockery out of it. He wants to be on the safer side and please don't get me wrong. He's made a mockery out of it. And all I would like to ask him, if he'll ever have the courage to speak in the same lines, the same words about any woman in his family and say that, I'm sorry, this is not what I meant to say. With a smile, with a very, very dirty, scoundrel smile he had on the face. Please ask him if he'll have the courage to use the same words as he has used against me, against any woman in his family. And then he should apologize and say, I'm sorry. Family is one thing. Sadiq, நீங்க இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணீங்க? நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன், அது ஆனர் போடுறது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கா? அவ்வளவு கேவலமா வார்த்தைகள் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா நீங்க சேம் வார்த்தைகள் உங்களோட ஃபேமிலி விடுங்க, உங்களை திமுக லீடர்ஸ் பத்தி சொல்வீங்களா? என்னுடைய விளக்கத்தை நீங்க முழுசா கேட்டாதான் உங்களுக்கு புரியும். அதனால ஒரு 2 செகண்ட் மட்டும் கேட்டுக்கங்க. இதே 2004 சோனியா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொன்ன போது இதே சோனியா காந்தியை பத்தி எல்லா ஆப்போசிட் லீடர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு கேவலமா பேசுனாங்கன்றது இன்னைக்கு எல்லா யூடியூப்லயும் இருக்கு.
சரிங்களா? நான் வந்து சரியா பேசுறேன்னு சொல்ல வரல. நான் ஆமா தப்பா பேசிட்டு அதுக்கு வருத்தப்படுறேன், மன்னிப்பு கேட்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா எவ்வளவு இஷ்யூ நடந்துட்டு இருக்கு. இதே அண்ணாமலை அவர்கள் நேற்று மினிஸ்டரை பார்த்து நாயி பண்ணின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு, பிரஸ்ஸை பார்த்து குரங்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒரு நிமிஷம் சாதிக், இதுதான் ப்ராப்ளம். எல்லா வாட்டியும் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இந்த வாட்டி இது சொன்னாங்க அது சொன்னாங்க. நீங்க உங்க ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி சொல்லுங்க. நீங்க திமுகல இருக்கீங்க, திமுகல யாரோ பத்தி இந்த மாதிரி பேசலாங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகேயா? மேடம் இது கேளுங்க, யாரோ அதெல்லாம் வைரல் ஆகல, இது வைரல் ஆயிருச்சு. இருந்தாலும் அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். வைரல் இல்ல சாதிக், ஒரு நிமிஷம். வைரல் இல்ல, நீங்க அவ்வளவு கேவலமா வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அதனாலதான் இப்போ எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. மேடம் இதே திமுக குஷ்பு இருந்த பொழுது அக்கா குஷ்புக்காக நாங்க பொதுக்கூட்ட மேடையில பேசுற போது, அவங்க கூட பிரச்சாரத்துக்கு போற போது இதே அக்கா குஷ்புவை பத்தி இதே பிஜேபி காரங்க பேசின எல்லா வீடியோவும் ஆடியோவும் இன்னைக்கு இருக்கு. This is ridiculous. Kushbu, can you hear this? Are you listening to what Sadiq is saying here? He is constantly justifying it, saying far worse has been said. That's the problem. That's an absolute problem with these people, because they all come into jumping to justifying what they have said. No amount of justification. That's why I say only one thing. Let him justify everything by uttering the same words, not even without changing a word. Ask him to say in Tamil if he has the courage to speak about anybody in DMK or his own family members. 2 + 2 cannot be 22. It will always be 4. Sadiq, Just because somebody has made a mistake, it's fine and that I speak the same line. No, it's not. I have condemned then, I have condemned today. You know, he's made a statement. Even when I was in DMK, I stood up. If I felt that it is against women, I have stood up. Issuing an apology will not solve everything. And what kind of an apology he is issuing? By justifying what he has said? No, with a bunch of terms and conditions that he's added to it. No, I don't need an apology. I don't need anything to do with such men. I refuse to even acknowledge such men. There's no place for me in my life for such men, because I feel they are absolute wasteful, and I refuse to waste my time over them. There are better things to do, but I definitely believe that these kind of men, when the CM says in a meeting that I don't know what kind of a complete thunder is going to fall on me, when it shows very clearly that he doesn't have any control over his cadres and party members. This is the proof to it. The problem is, the problem and the reason that we're doing this right now is to send across a message to the likes of Sadiq that they make these kind of statements, they cannot get away with it. They're going to be held accountable. Any party for that matter, you cannot get away by insulting a woman. You cannot just get away. If you think that party is going to stand by you, if you think that, okay, it's my birthright to get through this, no, then you're absolutely wrong. And any party for that matter, if they speak ill about women in such a derogatory manner, then I would say that they need to, be put somewhere where they can teach them a lesson or two as to how to speak to a woman or about a woman, how to respect a woman. Sadiq, நீங்க கேட்டீங்க குஷ்பு என்ன சொன்னாங்கன்னு. நீங்க அக்ரி பண்ணுவீங்களா? என்னன்னு அவங்க சொல்லிருக்காங்க, ஏதோ கட்சி இருந்துச்சுன்னா திமுக, பிஜேபி, அதிமுக இந்த மாதிரி பேசுறது, நீங்க என்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணீங்க, அதெல்லாம் தப்புதான். மன்னிப்பு கேக்குறீங்க? கண்டிப்பா மன்னிப்பு கேக்குறேன். பத்திரமா மன்னிப்பு கேக்குறேன். அவங்க மனம் புண்படுத்துற. ஒரு நிமிஷம் சாதிக், நீங்க ஏன் இப்படி சொன்னீங்க? நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? இது ஓகேவா? சொன்ன அர்த்தம் வேற, அங்க பொருள் கொல்லப்பட்டது வேற. என்னோட டங் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு. எப்படி வேணா சொல்ல. நான் சொன்னேன் இல்ல டங் ஸ்லிப். இது எப்படி டங் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு? நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்ல ரிப்பீட்டடா சொன்னீங்கல்ல, அது ஒரு வாட்டி டங் ஸ்லிப் சொல்லலாம், 2 வாட்டி 3 வாட்டி எப்படியா இருக்கும்?
மேடம், நான் குஷ்புவை வைத்து எங்கள் அண்ணன் கூட்டம் போட்டிருக்கிறார் அப்படிதான் சொல்ல வந்தது. நடுவுல ஒரு வார்த்தை நின்ன ஒண்ணு அதுக்கு அவங்க 1000 அர்த்தம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க. இருந்தாலும் அது தப்பு, அது அப்படி பேசிருக்க கூடாது. அதுக்கு வருத்தப்படுறேன், மன்னிப்பு கேட்கிறேன். திருமதி அக்கா குஷ்பு லைன்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்டயே நேரடியாவே சொல்றேன், ரொம்ப ஐ எம் சோ சாரி, அப்படி பேசிருக்க கூடாது, மன்னிச்சுக்கங்க. இப்போ குஷ்பு சொல்றாங்க உங்க தலைவர் உங்களோட ஆக்ஷன் எடுக்கணும், நீங்க என்ன ரிசைன் பண்ணுவீங்களா? குஷ்பு சொல்றாங்க நீங்க மன்னிப்பு கேக்குறீங்க, அவங்க சொல்றாங்க ரிசைன் பண்ணு, நீங்க ரிசைன் பண்ணுவீங்களா? இல்ல, நான் மன்னிப்பு கேட்டுட்டேன். ரெண்டாவது, இப்போ லேட்டஸ்டா 4ஆம் தேதி ஒரு மீட்டிங் டிஎம்கே ஹைகமாண்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க. அதுல என்ன அறிவிக்கல. இல்ல அது விடுங்க, நான் சொல்றேன், நீங்க சொல்றீங்க மன்னிப்பு கேக்குறேன்னு, அவங்க சொல்றாங்க ரிசைன் பண்ணு, நீங்க ரிசைன் பண்ணுவீங்களா? இல்ல ரிசைன் பண்ணல. நான் மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அது ஏன் ரிசைன் பண்ண, மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன், நான் அடம்ட்டா இருந்தாதான் நம்ம அந்த கட்டத்துக்கு போகணும். நான் தான் ஆமா வருத்தப்படுறேன்னு சொல்லிட்டேன். நீங்க தான் சொல்றீங்க, இல்ல நீங்க தான் சொல்றீங்க டங் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுன்னு. என்ன வார்த்தைகள் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல? எவ்வளவு கேவலமா இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல? அதுதான் மேடம், சோனியா காந்தி பேசுற போது, கனிமொழியை பேசுற போது, கலைஞர் குடும்பத்தை பேசுற போதெல்லாம் யாருமே இந்த கேள்வி கேட்காம இன்னைக்கு எப்போ கேட்கல? இல்ல ஒரு நிமிஷம் சாதிக், எப்போ கேட்கல மேடம்? எப்போ கேட்கல? நீங்க சொல்றீங்க இல்ல கனிமொழி பத்தி இந்த மாதிரி சொன்னீங்க, சோனியா காந்தி பத்தி இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, யாருமே ஒண்ணுமே சொல்லன்னு. இல்ல இது எப்போ ஆச்சு சொல்லுங்க. நிறைய யூடியூப் இருக்கு மேடம். பிஜேபி லீடர்ஸ்ல இன்னொன்னு இதை விட கனிமொழி அக்காவை பத்தி, டிஎம்கே லீடர் ஃபேமிலி லீடர்ஸை பத்தி, இதே 2004 நீ சோனியா காந்தி பத்தி எல்லாம் என்னென்ன பேசலாம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நான் அதெல்லாம் நியாயப்படுத்த விரும்பல. அது நடந்துருச்சு, அது சரியா தப்பான்றது அவங்க முடிவு பண்ணிட்டோம். ஆனா என் மூலமா ஒரு தவறு நடந்துருச்சு, அதுக்கு என்னோட வருத்தத்தையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். Kushbu, what's your response to this? The fact that Sadiq keeps saying that, in 2004 these were comments made against Sonia Gandhi, this has just become viral, so there's controversy. Kushbu, can you hear me? I don't think Kushbu is with us. So Sadiq also there, the DMK leader. We're going to wrap it up with this. He's saying that he apologizes for what he's done, but there's no question of him resigning right now. And with this apology, he adds several justifications, several caveats saying this is a tongue slip, that he, in fact, will not resign because this is a mistake that he's apologizing for. And thirdly, says that many such comments have been made, but nothing has been done before. That it's only because this clip has gone viral that he's now in the dock. The questions that will be asked right now is of the DMK High Command. Kanimuri has come out to publicly apologize on social media, but what beyond that is the question. Will they sack this Neta for making such terrible comments? Let me reiterate this. I said it through the broadcast that we've in fact had to beep out, blur out several parts of his comments because that's how derogatory it was against Kushbu. Right, so there you heard a face-off between the sexist DMK Neta and BJP leader Kushbu Sundar, who took him on head-on. She, of course, did not want to indulge in a conversation with him, but she says that she's not going to accept an apology because the comments, the level of comments, as Akshita was pointing out, made by that DMK leader Sadiq were completely below the belt. Some of them completely unmentionable in the way that he spoke about these actor-turned-politicians, these female leaders who had in fact taken to politics after their acting careers. Kushbu Sundar, of course, hitting out at him through a tweet, tagging Kanimuri and saying, is this the new Dravidian model? She, of course, getting a response from Kanimuri, who apologized, saying that as a woman, as a human being, we do not, in fact, as a party as well, do not condone, my brother and I, we do not condone these sort of comments which have been made by this leader, and we, in fact, apologize for the same as well. Akshata, my colleague, in fact, had that conversation with Sadiq as well as Kushbu. Akshata, summarize for us how he tried to justify in a way, while apologizing seemingly, but justified his comments. The apology, of course, came with terms and conditions. That's right, Paulami. So our apologies because that full conversation was in Tamil for a reason. He didn't speak any other language, but I'll try to break it down to you. It was a very long sequence, but along the entire course of it, despite me asking him several questions about the words he used, I asked him if he dares to actually say those kind of words on air right now, if he dares to repeat it, because that's how derogatory they were. He admits that yes, they were very, very lewd, they were very under the belt, but beyond that, he doesn't really make a comment. While he made these below the belt comments, he then goes on
to say that I apologize wholeheartedly to Khushbu, but I will not resign. He also adds to it saying that there have been many circumstances where people have abused Kalaigner's family, Karunanidhi's family, where they've abused Kanimuri, but that time there's been no outrage. And that really is the problem with this mindset that you're seeing right now, Paulami. Unfortunately for the likes of Khushbu, this is something she's far too familiar with. People find it simply too easy to target women politicians. And we've seen this a lot in the state of Tamil Nadu. Even the likes of Kanimuri has faced this several times, which is why perhaps as someone who's seen it firsthand, she chose to take a stand, taking this up on social media and issuing an apology for what's happened. And while that's greatly appreciable, this needs to be followed up with more sizable action, with a stand being taken by the Dravida Munnetra Kazhagam that if anyone at all, if it's a small-time Neta, if it's someone who's got the name DMK associated with them and makes these kind of comments about women politicians in the opposing party or within, they will immediately be removed, because then you're sending out a very, very strong message. The first step has been taken by Kanimuri, but a lot more needs to be done, because you see how this particular man also spoke, Sadiq. When I was having a conversation with him, it was clear from his tone that he was unrepentant. The only reason he was issuing an apology was because there was so much outrage, because India Today has picked this up, because we have gone all out to question him. So he knows that he's in a spot, pushed to a corner. He says he's been reprimanded and issued a warning by the DMK. That's why he's apologized. There's no other reason for it. He calls it a slip of the tongue. But if you listen to the entire statement and if you know Tamil and listen to what he said, it's deplorable to say the least. There are many parts that we've not put out here because that's how bad it gets, really. And the kind of comments that he's made is simply unacceptable. He's issuing an apology right now. But as Khushbu said, the last word rests with her. Considering the comments have been made against her, she's very clear, Paulami. She's saying that action needs to be taken by the DMK High Command. She's someone who's been in the DMK, and that's what she speaks about. She says that this party never allowed these kind of comments to be made. Kalaigner Karunanidhi had told her that, no matter what, ensure that women empowerment, upliftment, even of your opposing politicians, is something that you focus on. Do not badmouth any woman politician. If Kalaigner set up that kind of a bedrock, that kind of a foundation, why is it not being followed in the party right now? Why isn't the likes of this man, who can very easily be removed to send out a message, being done right now? So we'll track that very closely to see how the DMK reacts, because so far they've kept very, very mum, only for Kanimuri, of course, who's come out with that comment on social media. Right. Akshita and Akshay, my colleague, thank you so much for joining us. So you heard there from both the protagonists in this entire story, from Sadiq as well, who seems unrepentant while issuing some sort of an apology, a terse apology to Khushbu. Khushbu, of course, saying that she will have the final word, and it is for the DMK. Of course, she appreciates the apology from Kanimuri, but it is for the DMK, she says, to take stern action so that a message, a clear message goes out that this sort of language cannot be used against women politicians. Now, days after a blast in Coimbatore, war of words has erupted between the ruling DMK and the BJP, while the state BJP chief K. Annamalai has been terming it a suicide attack. State Minister Senthil Balaji has lashed out at him, accusing the Neta of politicizing the car bomb explosion. Here's a report. Cylinder blast in a car, an ISIS link, and a political slugfest. Days after a blast in Coimbatore, war of words has erupted between the ruling DMK and the BJP. While the state BJP chief K. Annamalai has been terming it a suicide attack, State Minister Senthil Balaji has lashed out at him, accusing the Neta of politicizing the car bomb explosion. Police was saying that it is a cylinder blast. Then we went one step further. We said it is a suicide attack. Tamil Nadu police is a globally renowned police force, on par with Scotland Yard. But the way the CM, way the DGP sir was speaking, the way others were speaking, it was like a childish school kids talking in front of a press. As the BJP called for a dawn to dusk bandh on October 31st, Senthil Balaji warned the Saffron Party of severe action. In a sensational allegation, Annamalai alleged that the Stalin government got intelligence alert about the bombing on October 18th. He questioned the DMK as to why the probe against deceased Mubin was stopped when it came to power. He slammed the DMK for alleged minority appeasement politics.
They have great officers, ma'am. My only worry is you are tying their hands. You are not allowing the officers to speak. And you want to tone it down, calling that as a cylinder blast. That is where we are angry, madam. If it has happened, you at least inform the public so that people take adequate precautions. The National Investigation Agency on Thursday took over the investigation in the Coimbatore car blast case by registering an FIR. With the recovery of 75 kg of explosives from deceased suspect Mubin's house, have the police busted an ISIS module in Coimbatore? With Pramod Madhav in Chennai, Bureau Report, India Today. Slipping into a very short break, stay tuned. News and updates will continue on the other side of this break. You are watching India Today. The 90s horror has come back to haunt Kashmiri Pandits in the valley, claims the minority community. Jammu and Kashmir's Shopia village is witnessing an exodus. As many as 10 families, comprising 30 to 40 Kashmiri Pandits, have fled to Jammu amid the rise in targeted killings. While the Shopia administration has denied claims of any exodus, Pandits who have since been camping in Jammu staged protest on Thursday and claimed the government is doing nothing but rubbing salt on their wounds. This time it's on part of the government. Government is denying exodus. Government is denying the killings. Government is saying everything is hunky-dory. They are celebrating Jashn-e-Kashmir, Jashn-e-Azadi, but bereft of Kashmiri Pandits. The plight of Kashmiri Pandits is political flashpoint in the Union Territory. Defence Minister Rajnath Singh, who was in the valley on Thursday, tore into previous governments for their alleged silence on the killings of Kashmiri Pandits over the years. जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बन गई थी, उसके पीछे ऐसे लोगों की चुप्पी एक बहुत बड़ा कारण थी। सबसे दुखद तो तब रहा जब कश्मीरी पंडितों को एथनिक क्लिंजिंग करके उन्हें घाटी से पलायन करने पर मजबूर किया गया। National Conference Chief Farooq Abdullah triggered a row when he said Kashmir will become 100% Hindu-less if the government fails to do anything soon. होम मिनिस्टर है, उनको देखना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो रोज कहते हैं कि हालात ठीक हैं, तो हालात ठीक नहीं है, नहीं तो हालात ठीक होते ये क्यों जाते? But I don't get an answer. The Congress lashed out at the centre and demanded that the Modi government release a white paper on the plight of the minority community during its 8-year rule. We need a white paper on the last 8 years of errors of omission and commission done by this government, which has led to a situation where there are target killings of Kashmiri Pandits, which has led to a situation where you cannot hold an election in the state. Remember them? Amber Heard and Johnny Depp have both been busy with their lives ever since the defamation trial. And everything seems to be going quite well for Johnny. He's returning to movies with the role of King Louis XV in Jeanne du Barry, has found love in his former lawyer, Joel Rich, and recently made 20 times the profit for his Queensland mansion. This isn't just any house, but it is the place where the infamous incident of Depp losing his finger took place. Amongst the many fights that were mentioned in court of the former couple, this incident was one to stick out quite a bit. He sold this mansion in Australia for $40 million. The house had 10 rooms with 10 bathrooms and a wine cellar with a capacity of 2,000 bottles along with a go-karting ground within that premises. To get into the details of this infamous incident, Heard had been throwing bottles at the actor, 2 bottles in fact, the second one resulting in a cut finger. Amber Heard did not agree to this version and said that Johnny Depp had instead been throwing those bottles due to anger, and that's how he cut his own finger.
The incident has taken place in 2015 and has been brought up in trial multiple times. Now, as the dust settles on the defamation trial, Johnny Depp has been seen doing quite a lot of concerts with his close friend Jeff Beck. And Amber Heard, on the other hand, is peacefully living her life in Spain. She will be seen next in Aquaman 2. Watching India Today. Welcome back. In a big move by the Indian Cricket Board, from now on, the women's team members will receive the same match fee as their male counterparts. The decision was announced by BCCI Secretary Jai Shah, who called this a new era in gender equality. India becomes only the second cricketing nation after New Zealand to implement an equal pay scale. It's a historic day for Indian cricket. The gender pay gap between the female and male cricketers has been done away with. The female cricketers in the country will now get exactly the same match fee as their male counterparts. BCCI Secretary Jai Shah announced the decision, saying that this was the first step by the board towards tackling gender discrimination in Indian cricket. He took to Twitter to announce that both men and women cricketers will now get the same match fee, a development that has been applauded by everyone. A huge development to lift the mood of the female cricketers and the nation. As cricketers, what we can do is to put up our best performance on a consistent level, which the team has been doing in the recent past. And I think for everything it will take some time. Nothing happens overnight, and I'm just very happy that BCCI and Mr. Jai Shah have taken this decision to have equal pay in terms of match fees for the players. The medalist, India! Women's cricket in India has come a long way in the last 10 years. Despite Indian women's cricket doing really well in the last 5 years, there was a huge gap in the match fee of male and female cricketers. So how much do the Indian players stand to get from this development? For every test match, women's cricketers will get 15 lakhs each. For ODIs, it will be 6 lakhs, and for T20 internationals, it will be 3 lakhs each. Same as that for male cricketers. New Zealand Cricket was the first board to make such a move earlier this year, and Cricket Australia is likely to follow soon. बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जब हमने खेलना स्टार्ट किया था तो हमने ट्रेन की बोगी में जो स्लीपर क्लासेस रहते हैं उसमें हमने शुरू करा था अपना क्रिकेट. लेकिन अभी जो आगे आने वाला टाइम है और लास्ट 5 इयर्स से जब से टेलीवाइज हुआ है, पता चला है लोगों को, तब से लोग ज़्यादातर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को और अच्छा मिले. और उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. 2017 वर्ल्ड कप, उसके T20 वर्ल्ड कप, वी आर फाइनलिस्ट इन बोथ द वर्ल्ड कप, और अभी हमने कॉमनवेल्थ में भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो वी डिजर्व दिस. The next big move is the Women's IPL, which has been in the pipeline for some time now and is expected to be launched next year in a 5-team competition. Surely the women's cricket in India has come a long way, and televising their matches is one of the reasons why the likes of Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur and Shefali Verma have become household names. Now they have been duly rewarded and there's more on its way. Sports Bureau, India Today. Slipping into a short break, coming up next, Kejriwal writes to Prime Minister Modi demanding Goddess Lakshmi and Ganesh to be put on currency notes alongside Mahatma Gandhi. Details on the other side of this break. You are watching India Today.
Ayush, what's gone wrong with the Facebook dream, the Facebook model? Revenue declined for 2 straight quarters for the first time in the company's history, and a revenue drop expected in the ongoing quarter as well. It looks like all is not well in the meta world clearly. Remember, all of this comes on the backdrop of a bunch of things. Weak global economic growth, competition from the TikToks and the B-Reals of the world. B-Real seems to be an app a lot of youngsters are using nowadays. Netflix and Disney for advertisers. Concerns, of course, around profitability and return on investment. What is the metaverse? This abstract concept that Mark Zuckerberg's been talking about. Of course, there's also the threat of regulation in different countries around the world, even in markets like India. It seems like when you speak to people in the tech world, people aren't entirely sure about this meta dream that everyone's talking about. Mark Zuckerberg has a certain interpretation or a vision of the metaverse, and clearly, judging by these results, all is not well. Ayush, do you think the steps the company has announced will work out? Well, that's an interesting question, because in terms of reviving the company, Mark Zuckerberg's bet seems to be the metaverse. And if that's his interpretation of the metaverse, for now we've seen no real proof of concept. And while there is potential in this whole Web3 world about what the metaverse will be all about, we don't know if the metaverse will take off in a big way, apart from maybe gaming perhaps. And then when you're talking about gaming, there's a bunch of competitors who are already investing, like the Microsoft Activision deal, $69 billion, so much potential to do things in the Web3 world or the metaverse world. But all of this is Web3 conversation or conversations of the future. In his Web 2 businesses, they aren't necessarily innovating. If you have a look at them, Facebook is used lesser and lesser by teens. A lot of people have flocked away to TikTok, BeReal. Snapchat's always been a lot more popular. Facebook, of course, is used lesser. Then if you talk about any new feature that maybe Snapchat or TikTok launches, Facebook and Instagram seem to copy it almost in a matter of days, if not weeks. Reels is something that the company has taken a very serious stance on. They want to monetize it and make it a revenue driver. But even in terms of Reels, there's a lot of competition from other short video apps. Here in India, there's a bunch of indigenous apps which came with the TikTok ban. And in the rest of the world, TikTok seems to be quite popular, if not more popular than Instagram's Reels product. A very good afternoon. You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. The headlines first. Kejriwal writes to Prime Minister Modi demanding Goddess Lakshmi and Ganesh to be put on currency notes alongside Mahatma Gandhi. Reiterates his demand. Storm over DMK leader's derogatory remarks. Sexist Neta calls BJP actor turned Neta's items. Remains brazen, says his remarks are being misrepresented. After Madrasa, now survey of Arabic schools in Karnataka. After complaints of poor standards of education, state to now conduct a survey of around 200 Arabic schools. Politics over Atmanirbhar defense push. In fact, BJP Udhav Sena fight over C-295 jet deal. Aditya Thackeray says BJP working for its own profit. BJP says deal struck in a Ghadi era. Meanwhile, fresh LG Delhi government war begins. LG stops Aam Aadmi Party anti-pollution drive. Kejriwal calls this move as dirty politics. BJP says toxic Yamuna water is life-threatening. Now, Elon Musk officially takes over social media giant Twitter, terminates top executives, including CEO Parag Agarwal and legal head Vijaya Gadde. Right now, the war over gods on notes continues as Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal now, who demanded Lakshmi and Ganesh's
photos to be inscribed on currency notes, has now written a letter to Prime Minister Modi on the issue. Kejriwal, who's eyeing on Gujarat elections, is campaigning for his party in Prime Minister Modi's state, has claimed that everyone is in agreement with his demand and there is tremendous public support to it. The AAP convener has once again argued that the country will progress by putting up the picture of Lakshmi and Ganesh on Indian rupee. Congress and BJP have come down heavy on Delhi Chief Minister, calling him Chunavi Hindu. The Saffron Party advised Aam Aadmi Party to put up images of gods in government offices. In fact, Kejriwal's demand has now come as a Pandora's box. Congress MP Manish Tiwari has now demanded Ambedkar's photograph on notes, while Maharashtra BJP MLAs Ram Kadam and Nitish Rane have suggested Chhatrapati Shivaji Maharaj's image on Indian notes. आज अभी अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है कि नोटों के ऊपर श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का ना तो हिंदू धर्म मुद्दा है, ना लक्ष्मी जी और गणेश मुद्दा है। मुद्दा तो ये है ही नहीं, मुद्दा तो चुनाव है, क्योंकि गुजरात में जो वो टोपी पहनकर वोट ले आते थे, उस समुदाय ने वोट डालने से मना कर दिया। तो अब वो ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी, मुद्दा ना लक्ष्मी जी हैं आपके लिए, ना गणेश जी हैं, ना आपकी उनमें आस्था है। आप तो केवल और केवल नास्तिक हैं और वोटों के लिए किसी स्तर पर भी गिर सकते हैं। सच ये है कि गांधी जी का फोटो के अलावा वहां किसी का भी फोटो नहीं होना चाहिए। जहां तक लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात है, वो हमारे आराध्य देवता हैं, मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है। हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। कम से कम उनको राजनीति में मत घसीटिए। और एक बार अगर केजरीवाल जैसे लोगों की बात मानने के चक्कर में सरकार आ गई और अपने नोट के ऊपर गांधी जी के अलावा और लोगों के फोटो डालना शुरू किया, तो एक पिटारा खुल जाएगा। सभी लोग अपने अपने महापुरुषों का फोटो लेके खड़े हो जाएंगे। All right, let me quickly cut across to Kumar Kunal joining us live more on that. Kunal, you know, initially we thought it was Kejriwal's mere suggestion, considering polls in Gujarat, and he's trying to woo the Hindu voters in the state. But it appears that he's quite serious. He's now written a letter to Prime Minister Modi demanding the same, asking for Goddess Lakshmi and Lord Ganesh's images inscribed on Indian rupee, just like the way Indonesia has done, being a Muslim country. Exactly, and you don't forget the timing. He is going to Gujarat today on a 3-day tour, and that's why the timing of this letter is quite important. 2 days ago, he did a press conference and he demanded the same through that press conference. Now he has written a formal letter to Prime Minister Narendra Modi and demanded the same. And he also claimed that 130 crore Indians are supporting his demand. So obviously on social media, there are reaction over it, that how Kejriwal can claim that all of the Indians are supporting this idea. So obviously political parties are reacting, common persons are also reacting over it. So what is the actual idea behind the whole thought is to create an image, what actually Arvind Kejriwal wanted for him. He is actually trading a soft Hindutva line, as he knows that it will work, it might work in Gujarat and Himachal elections. That's why just ahead of Gujarat tour, a 3-day Gujarat tour, he wrote a letter to Prime Minister Modi also and demanded the same. So obviously there will be some reactions, and he actually want those reactions to come so that he can portray himself as a bigger Hindutva, his model as a bigger Hindutva model, as a larger Hindutva model. And even he wrote in his letter that he actually wants this because the economic situation of the country is not that good. That's why he is putting this idea through. Now BJP is also in a fix how to react over this, but definitely it has somehow created a controversy for sure. This is now become a political slugfest. In fact, you have the Congress party asking for,
Indian icons and freedom fighters' images to be put up on currency notes. So this demand will never end once it begins. But nonetheless, this isn't the first time that Arvind Kejriwal has played this Hindutva card. Last month, he emerged from the Somnath temple with a tripund on his forehead and Rudraksha around his wrists. He's also chanted the Hanuman Chalisa and has flagged off pilgrim trains to the temple town of Ayodhya. But the question here is, will the Hindutva vote gambit really will it pay off for the Aam Aadmi Party this time around? Let's have a listen. Gujarat, often called the first Hindutva laboratory. And when you fight the BJP on Narendra Modi's home turf, what do? Aam Aadmi Party convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has decided to play the same card. His brand of Hindutva versus the Sangh Parivars. आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए. Kejriwal's prescription to revive the economy and a falling rupee is not the first time he's playing to Hindu sentiments. From prayers at the Somnath temple to darshan at the Sri Ram Janmabhoomi temple, to choosing Ayodhya as one of the destinations in his free pilgrimage scheme to Delhi's senior citizens, to celebrating Diwali at Akshardham, Kejriwal has lost no chance in flaunting his Hindu credentials. प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं. मैं व्यक्तिगत तौर पे हनुमान जी का भक्त हूँ. हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो उस नाते मैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी दोनों का भक्त हूँ. From public events to media conclaves, the Hindu Bhakt is an image he has crafted with much care. Kejriwal, often accused of soft Hindutva, doesn't mind the tag. मेरे हिसाब से भगवान राम का संदेश, उन्होंने जो जो बोला, वाणी उनकी, रामायण में जो जो लिखा है उनकी वाणी, उनका आचरण, यही हिंदुत्व है. उसके अलावा कुछ भी हिंदुत्व नहीं है. Combining politics and religion, will Kejriwal's own brand of Hindutva pay off? Bureau Report, India Today. All right, here's some big news that we're currently tracking. The LG House sources have responded to the Aam Aadmi Party's allegation, saying that Delhi LG refused to clear the file of AAP's anti-pollution campaign, red light on, Gadi off. That's the campaign that they want to roll out, and they accuse the Delhi LG of disrupting the campaign by not clearing the files. Now, here is LG's response to that. It says AAP Minister Gopal Rai gave wrong facts to the people of Delhi that this campaign of red light on and Gadi off was to be launched on 28th of October. The file sent to LG by Chief Minister Kejriwal clearly mentions the date of 31st of October for the scheme to be rolled out. Moreover, the file was sent to LG the secretary there on 21st of October, which was Friday, after which offices were fully opened only on Thursday, 27th of October. And post that, the weekend, Gazette holiday and restricted holiday. The files sent to the LG are not pre-functionary in nature. In fact, they require proper consideration and application of mind, which is why the delay. Let me cut across to Kumar Kunal, joining us live for more on that. Kunal, we hear Aam Aadmi Party accusing the Delhi LG of not clearing the anti-pollution campaign. Would you tell us what's been the response? I just read out the exact statement coming in from the Delhi LG's office that AAP has lied that this campaign was to start on 28th of October, whereas the fact is 31st of October it was to start. But the file came to the Delhi LG's office itself on 21st of October, and it's been the holiday season, offices have shut, and this does not take a quick sign for it to clear. It's good deliberation that's needed to this, so it will take a little time. Why blame us, says LG? Exactly, and yesterday Gopal Rai
did a press conference over it, and he claimed that they were about to launch this campaign from 28th, that is today. And since LG House has not given permission for that particular campaign, so it has to be delayed. Now LG House came with a note on which there is a signature of Arvind Kejriwal and Gopal Rai as well, and they have underlined that what was written in the note, that it will be launched from 31st of October. So that is the whole controversy. Now what LG House is claiming, that Gopal Rai was actually misleading the people by telling them that they have to launch the whole scheme from 28th, that is today. So obviously the timeline which was given by the Delhi LG, that it is a festival season and offices were closed, that's why some time has been taken. And also he has written that since 1,500 volunteers will be on the road, so they have to take a proper consultation process. They will involve with a consultation process, and then only will arrive on any decision. So this is the whole controversy about, but now it will be interesting that how Aam Aadmi Party will react to the controversy. All right, we'll see how that pans out. Thank you very much, Kunal, for joining us. Now, meanwhile, Now, national capital is witnessing land, air and water pollution all at the same time. To battle this, Kejriwal government has launched the Red Light On, Gaadi Off campaign, but had to postpone it as AAP claims that it didn't get appropriate approvals by the Delhi LG. Here's a look. Firecrackers on Diwali night. Stubble fires triggering smog alert. And now, the froth that has covered River Yamuna ahead of holy festival Chhath. Delhi is witnessing land, air and water pollution all at one time. To tackle the deteriorating pollution, Aam Aadmi Party government launched Red Light On, Gaadi Off campaign. But now, the drive also is in a limbo. The Arvind Kejriwal government claims Red Light On, Gaadi Off campaign has been postponed as no approval has been received from Delhi's LG VK Saxena. 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने एलजी साहब को इसकी फाइल भेजी, लेकिन अभी तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस फाइल को रोक के बैठे हुए हैं। हमें अभी इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इस बार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर तुली हुई है कि दिल्ली में किसी भी स्तर पे प्रदूषण कम नहीं होने देना है। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also hit out at Delhi LG for not approving the campaign. He said, and I quote, "It's really very sad that efforts of Delhi government to curb pollution, which played critical role in reducing pollution all these years, are being stopped now due to dirty politics." While the Delhi LG and Aam Aadmi Party led state government fight over the campaign to tackle air pollution, the BJP has raised issue of toxic froth that has covered River Yamuna ahead of Chhath Puja. The BJP slammed Aam Aadmi Party's plan to clean toxic froth using chemicals. हम यही दिखाने आए थे कि भाई केजरीवाल जी आपके दावे सिर्फ दावे हैं, जमीन पे कुछ नहीं। अब उनको जैसे पता चला कि ये झाग कैमरे में आएंगे, उन्होंने आज सवेरे सवेरे देखिए इतना केमिकल डाल दिया है। यमुना जी में केमिकल डाल करके आप कितना बड़ा जहर परोस रहे हैं, क्या ये एक्सेप्ट है? Aam Aadmi Party asserted that anti-foaming chemical technology has been recommended by central government as well. With no end to politics over pollution in the national capital, the city is in dire need of stringent measures to tackle alarming pollution levels. Bureau Report, India Today.
Yes, some big news coming in. Horrific visuals coming from Delhi. A CCTV footage showing road rage. CCTV footage showing how an incident of road rage shows a man running over residents at Alipur. 3 men have been injured in this case. The incident happened on 26th of October, where the altercation started after a car driver deliberately hit a biker. In fact, when residents opposed this fight, he ran over his sedan on them. Shocking CCTV footage coming to fore from Delhi. Delhi's Alipur. This footage has been captured.